Good afternoon, guys. I am Sunil from Movie Talkies, and today we are here to know more about Dishum. The star cast, the directors, and the producers are here with us to tell us more about it. I think you should. You're the only girl, Lucy. There's no other reason. I think you should only stand. We'll all sit and you stand in. Sorry, आप क्या कह रहे थे? आप इतने हैंडसम है, पहले मैं आपको ही देखता रहता हूँ। फिर नहीं, क्या सीन था ये? एक्चुअली लास्ट दिन है हम सब तीनों का साथ में, एंड इट्स ए इम्पॉर्टेंट सीन। हमारी फिल्म जो है वो यूएई में बेस्ड है, तो उसका ही सेट लगाया गया है महबूब में, एंड अकॉर्डिंग टू रोहित्स विजन एक बहुत ही खुफिया सीन हम लोग शूट कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं अगर ये हमें परमिशन दे तो। खुफिया है तो रहने दो ना, खुफिया ही मज़ा आएगा आपको देख के ये सब। और एक्चुअली एक सेक्शन है पिक्चर का, पिक्चर मिडिल ईस्ट में बेस्ड है, तो एक अंडरग्राउंड बंकर है जहाँ इनके कैरेक्टर कबीर और जुनैद घुस जाते हैं किसी को ढूंढने, और फिर इधर गाना होता है जो हम 4 दिन के लिए शूट कर रही थी, जैकलिन वाज डांसिंग वेरी वंडरफुली, एंड दैट्स व्हाट इट इज। So it's, I mean, it's like Varun said, a very, it actually leads up to a lot of action, and it's quite an intense scene that we're actually shooting today on the last day of our film. And it's fun. I mean, like the entire film has been that. There's been like a lot of thrills, action, intensity. It's like on the go. It's fast paced, and yeah, I'm just glad that we were kind of able to all end together. From what I've heard, the movie is a very Bond-focused space, right? In terms of action, locations, the pace. But then the references. Locations, you could say, but besides that, no parallels from a Bond movie. It's actually a lot like a buddy cop film. So it harks back to a genre of Lethal Weapon, Andar Bhar, Main Khiladi Tu Anari, Bad Boys. So that's the world the film's based in, and that's... No, not too much slapstick comedy. There's a lot of humor. Both the characters are very different. And but the film has a lot of light-hearted humor as well, packed with the action. इनके साथ ही होती थी। हाँ, बचपन में मैं काफ़ी पिटता था इनसे, एंड सो आई थिंक जो भड़ास ये बचपन में नहीं निकाल पाए, आई थिंक ये पिक्चर में मुझे कास्ट करके वो पिक्चर में निकाल रहे हैं। It's honestly been a very challenging film because there's a lot of action in the film. John and me have been through some really daredevil stunts, and I'm actually very thankful that I have a partner, a co-actor like John, because when you're doing action, when you're risking your life for these things, you need someone who has your back. And honestly, honest to God, every stunt that was there, first John would try it, then he would be like, okay, you do it. Even if he was not in the stunt, even if it was any kind of rigging or any type of stunt, he would go through it first, and then he would be like, okay, Varun, this is the way you do it, and according to a hero, even the looks you have to give. So I had a lot of support from him. So I felt like I didn't have one, but I had 2 brothers on the set. वॉल्यूम ऐसे कहा गया था कि डिशूम की शूटिंग में आप काफी छोटे लोग इंजन्स काफी थे, उसके बाद भी आपने शूटिंग किया, क्या डेडिकेशन की बात, क्या कैसे इंजन्स लगी और क्या क्या? No, I think that's part and parcel of shooting. It was just एक incident था जो थोड़ा सा जब where I kind of, I mean they say I passed out. But I felt it was for just a few seconds, but I think Rohit says it was for... No, there were some extreme conditions, I think, Yeah. that, you guys had to shoot in. Weather conditions and action scenes and, but you know... Varun did pass out, by the way. I did. I fainted for a bit. But the funny thing is this, कि जब ये मेरे साथ हुआ था, that was the only day I was not shooting with John. That was the only action sequence I was doing alone. And that's the time I actually went through this. Whenever John was around, he always, he didn't let a stunt happen before he saw the safety rigging. Yeah. और वो सब check करते थे, all the ropes, the steel harnesses, and only then we used to get onto a chopper or a speed boat or a fast car. क्योंकि उन्होंने तो बहुत bones तोड़े last 15 साल.
बट आई थिंक जॉन और मैंने अपनी आईसाइट साथ में खोई थी इस पिक्चर के लिए बिकॉज ऑफ द क्लोरीन. वी हैड अ अंडर वाटर शूट वे हम लोग सुबह 7 बजे से आई थिंक तकरीबन 7 बजे इवनिंग तक शूट कर रहे थे. एंड आई रिमेंबर इट वाज इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का सेमीफाइनल था. तो हम लोग सब एक्साइटेड थे कि जाके देखेंगे कब शूटिंग ख़त्म होगी, कब शूटिंग ख़त्म होगी. पर जब शूटिंग ख़त्म हुई तो हम लोग देखने के लायक नहीं थे. मतलब क्लोरीन. यहाँ बिकॉज ऑफ द क्लोरीन सब हेज़ दिखाई दे रहा था. Yeah. क्योंकि आपने अपने लास्ट फिल्म शाहरुख खान के साथ में की है, तो आपको पता है कि कितनी मार्केटिंग करते हैं. हाँ जी. इस फिल्म में इस फिल्म की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे करनी है, क्या इसी तरह कुछ होगी आपकी प्लान? आई थिंक थोड़ा डिफरेंट होगा बिकॉज साजिद सर का एक अपना विजन होता है एंड ही इज़ ब्रिलियंट. जैसे मतलब उनके स्टार्टिंग से जब मैंने इनकी फिल्में देखी है तो ही हैज़ अ वेरी डेफिनेट विजन द वे ही वांट्स हिज फिल्म्स टू बी प्रमोटेड. आई थिंक तो वी विल बी फॉलोइंग दैट काइंड ऑफ विजन विद डिशुम्स मार्केटिंग. बट डेफिनेटली आई थिंक अप्रोच ये है कि हम तीनों साथ में हैं तो कुछ नया करेंगे. वी आर बिकमिंग अ डिजिटल वर्ल्ड सो वी विल बी टेकिंग दैट कॉन्सेप्ट अहेड. जैकलीन हैज़ a lot of concepts about Dishum clothes, which I think you should share with them. I think it's about innovating right now and being creative. It's a very like fast-paced industry, and people are innovating all the time. So yeah, it's just about doing things differently and really kind of exciting the audiences right now. If we feel not कि जो much will be recreated for this film, कितनी सच्चाई है इस बात में? Not at all. Very nice song. Not at all true. What is They're it all like? original songs given by Preetham, and it's a very very fun soundtrack. So series coming out on 29. So do we see Dishum trailer coming out? No, we're not ready yet. We should come. The trailer should come out in house soon. Okay. That's June 3rd. But also, you have worked a lot with Telugu, so how is it working with Logan and Hollywood? More like a responsibility. I remember when I started Judwa, 95. He was about 5 years old, and 8 years old, Rohit. And to get both these brothers in one film is a great responsibility for me, because as all you all know, David, he'll not spare me if something goes wrong with the publicity. so it's a more pressure for me to take care of kids. And John and I, we work. Jacqueline is I think fourth family, movie, and so yes. great. I mean, With some action in the middle. Action She and gets hit couple of times. Well, actually, like I'm not physically part of the action, but so I'm not doing actual action, but I am physically there. I am part of it with the boys, and so I have got to experience what they go through. But most of the time, it's like about kind of. Our character is a The great mix chases. of glamour and grunge. She's a part of all the madness, Yeah. but They're doing all the work, kind of thing. Jacqueline, how did this stand out in a film besides two extremely popular young actors? I actually didn't think about it, but it's fun. I mean, like I don't think you really get into a film trying to compete or trying to, really get into how you're going to stand out with, the actors that you're working with, because it really is about, at the end of the day, the teamwork and the camaraderie that you guys share, and that's the most important thing. And that was, I think, when we, shot this film, throughout it was all about like how and what we could do for the film. So yeah, and it was like a really, really fun experience for all of us. One more telling about the stunts and performing, because nowadays you prefer doing your own stunt acting. How do you take this and like the safety measure into? See, I think this film was. I'll speak about the film more than anything else. I think coming together on a film like this is where you have probably the most powerful individual producer like Sajan Nadiadwala. You have probably the youngest, most popular actor in Varun, and you have someone so beautiful and so popular. In fact, her following is unparalleled in Jacqueline. She's really popular amongst the youth. And you have someone like this boy, who I've done Desi Boys with him, and I can speak for him, and I can say you'll see him after Dishum. He's going to be a powerhouse. So I think when you have a combination like that, and when we are all working together as a unit, the results are going to be fantastic.
And I think we work, like Varun and me, our relationship off the set is even more comfortable sometimes than when it is on screen. And that really shows. And just the relationship that Rohit and all of us share is absolutely brilliant. So it's very seamless. This whole film is very seamless. Sajid and I have worked together before, and all credit to him, for mounting a film like this. Yeah. I'm a producer, I know how tough it is. And he's done such a fantastic job, and there's so many things you have to deal with. And I think he's done everything so beautifully, and he still, trust me, sits here with a smiling face. It's damn tough. So I think a big congratulations to him for really making this film happen and seeing us through this last day. And I guess the rest is now all Like up this to film, my I just babies. like to add, this film was, I was writing this film at a time where I was at like a really lazy stage. It was like, it had been a couple of years from Desi Boys. I was helping Dad out with My Tera Hero. And I just kind of had a couple of ideas, and I didn't even kind of totally love them at that point. And I remember when Sajid Bhai just called me and I shared them with him. And he tapped onto this one, and it was just his sheer confidence and faith that he showed in me that has allowed me to fly, and that pushed me to go ahead and write it and just get back to work and get back to the grind. So it's all thanks to him, to just get us all together and put this together. Thank you. When you met John for the interview, he said you are a combination of Yeah, it's man and complete freedom. What Once. do you have to say to that? What? He's a combination of stuff. I'm a combination. You are Salman and Govinda. You are Salman and Govinda put into one. I think that's very unfair to He's a them. combination of my father and mother. That's true. As you learned the technique of knives, anything new that you've learned for this? No, not really. I think we've left it to our action directors. Yeah. Correct. We have two really good action directors on the film. Stefan from Germany, who had previously worked with Sajid Bhai on Kick, and Alan Amin, who's a very, very popular Hindi film industry action director. And you'll see some pretty spectacular stunts in the It's film. very large. Yeah, it's larger than life, but it involves a lot of different vehicles, and the best part is it's all done by John and Varun. There are no stunt doubles. It's all The physics. आपने हवाले आपने रॉकी एंड के समय बताया कि डिशूम का जो स्टंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है ये चीज कही थी बागी में हमने देखा है कि वो बिल्कुल डिफरेंट लेवल का है इवन कमांडो में भी वो अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ये किस लेवल तक जाएगा पता नहीं अभी फोर्स 2 में और कुछ करूँगा मैं और उसके बाद इट विल कीप नहीं कंपटीशन नहीं है अच्छा लगता है अगर कोई कुछ अलग करे तो अच्छा ही लगता है हम लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कम्पीट नहीं कर रहे हैं एंड आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट फॉर द ऑडियंस टू सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्म्स तो स्टंट से ज़्यादा अगर फिल्म्स की बात करें तो फिल्म शुड बी अ लॉट फॉर एंटरटेनमेंट आई थिंक जो यूएसपी होगी इस एक्शन की कि जॉन ने खुद किया है एंड इसमें कोई स्टंट डबल यूज़ नहीं हुआ है इसमें कोई फेस रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है इसमें कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं है वी जेन्युइनली डन एवरीथिंग टुगेदर एंड आई होप वी कैन रिलीज द मेकिंग ऑफ द एक्शन तो आप देख सकते हैं कि हम लोग कितने डरे हुए थे हम लोग मतलब मैं कितना डरा हुआ था बट उस वक्त यू विल रियली कम टू नो व्हाट गोज बिहाइंड a stunt like that because and मेरे हिसाब से the physical fitness on Dishoom is off the charts. I think when you have a man like John Abraham, you have someone like Jacqueline Fernandez, मतलब कुछ भी हो जाए जिम तो जाना ही पड़ेगा आपको वरना कल शूटिंग पे आप कौन सा मुंह लेके जाओगे वो पता नहीं आपको बिकॉज इतने फिट लोग होते हैं ये फिल्म पे. आई थिंक शी वुड बी डूइंग Zumba on one side, insanity workout. John is working out on another side. Yeah, there's a full section where we are in. ऐसा हम दोनों के बीच में नो वी आर प्लेइंग अ टीम इन द फिल्म और जैसे मैंने बोला कि जॉन मेरे भाई की तरह है तो कोई मेरे साथ लड़ेगा तो पहले जॉन आएंगे तो सोच समझ के लड़िए मेरे साथ. मुझे शुरू से डिशूम का साउंड बेटर लगता है एज कम्पेयर टू डिशूम. हाँ तो मतलब सब जानते हैं एक ही पिक्चर की बात कर रहे हैं तो हिंदी में लिखना हो तो डिशूम. हाँ DISH. Just sounds like it's slicker.
किसका? धूम का रेफरेंस? नहीं, कोई I रेफरेंस just नहीं है. feel this is साजिद से मैंने यही कहा first time when we साजिद correct me if I'm wrong. पहली बार when I heard the script, I only told Sajid there is going to be a Dishumate. This is the youngest, this is a younger franchise because of Varun and Jacqueline. क्या है ना कि ये franchise बहुत young है, and I think this franchise will keep going on, and it's a very हम लोग अक्सर franchise बनाते हैं franchise बनाने के लिए. I think this is a very franchisable film, and it's going to be, according to me, and we were discussing, I think it's going to be the biggest franchise India has ever seen. Fingers crossed. यहाँ पर एक पिता की बहुत बड़ी बात होती है कि दोनों भाइयों को या अपने दोनों बच्चों को एक साथ देखना चाहिए. फिल्म भी है और फिल्म इंडस्ट्री भी है, कुछ नया कॉम्बिनेशन है. हम श्योर थोड़ी बहुत बातें हुई पिताजी की, बट आप दोनों के बारे में, इस फिल्म के बारे में पिताजी ने क्या कहा? आई थिंक रोहित विल अग्री विद मैं क्या कहने वाला हूँ. मेरे पिताजी को सिर्फ ही इज़ कंसर्न विद ओनली अ सर्टन सेक्शन ऑफ पीपल एंड दोज आर कॉल्ड द ऑडियंस. बाकी सब ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि जब हम लोग फिल्म बनाते हैं वो लोग ही पैसा दे के अंदर जाते हैं. तो एंड ही बिलीव्स इन दैट, इन हिज सिनेमा इज़ दैट यू कैन नॉट चीट द ऑडियंस. आप जो भी करो, आप मतलब भाई बहन साथ में आ रहे हैं, भाई बाप आ रहे हैं या बाप बेटा आ रहा है, डजेंट मैटर. यू शुड नॉट चीट द ऑडियंस. एंड आई थिंक Rohit has that much honesty, I feel, as a filmmaker, that he is also keeping the audience in mind. He doesn't care when we are on shoot that I'm his brother on the other side or John he's so close to on the side. What matters is that हम लोग ये जो फिल्म बना रहे हैं, हम लोग ऑडियंस के लिए बना रहे हैं. एक स्टोरी है जो हमारे देश के बहुत करीब है. It's I think the story is what made me want to do the film also. And I'm very happy, obviously, as a brother, that this is my brother's next film, and I'm also happier that I can be a part of it in some way. Will Dishum be a solo release in the box office? Because for the moment speculations are right that Shah Rukh Khan's release could move into July 29 to avoid the clash with Sultan. No, we are coming on 29th. I don't think there's a clash. If it happens, if race comes out, will that be a It's too hypothetical. I don't think. 29th को कोई ना वहाँ ईद है ना दिवाली है, क्रिसमस नहीं. I don't think he'll come. That date is for Kick. We release मुझसे शादी करोगी on that day. We release Kick on that. I think it's a small event for our company on that day. See, honestly, मेरे लिए हर फिल्म इम्पॉर्टेंट होती है. चाहे मैं उसके लिए चाहे मैं उस फिल्म में एक दिन का काम भी करूँ. एवरी फिल्म इज़ वेरी क्लोज टू मी. एज़ फार एज शुद्धि इज़ कंसर्न, आई थिंक करण जौहर जी ने जवाब दे दिया आप सबको. मैं धर्मा के साथ एक दूसरी फिल्म कर रहा हूँ जिसका अनाउंसमेंट बहुत जल्द होने वाला है. ओके, वरुण और जॉन, आप लोगों से जानना चाहेंगे क्योंकि इन दिनों हमारे इंडस्ट्री में भी बहुत कुछ लोगों के साथ में बहुत कुछ डिस्कशन हो रहा है. और कौन कौन क्या हुआ उन लोगों के बीच में? अच्छा, आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं या इन्वॉल्व होना पसंद करते हैं? हमारी टाइटल डिशुम. हाँ, हमारी टाइटल डिशुम है, डिशुम नहीं. तो वी आर नॉट इन, वी डोंट, आई डोंट नो एनीथिंग. आई डोंट गेट इनटू दिस थिंग्स. ओके, साजिद आप दोनों से मेरा एक सवाल है. जुड़वा की अगर बात करें तो जुड़वा तो आप भी उन्होंने कब जुड़ मतलब वी आर डिशुम, बट जुड़वा तो कब स्टार्ट हो सकेगा प्लीज? डैड लिख रहे. रोहित वर्मा, आप दोनों से सवाल है. रोहित, अब आपके भाई बहुत पॉपुलर एक्टर है, क्या आपकी हर फिल्म में कहीं ना कहीं वरुण नजर आएंगे? और वरुण, क्या आप हर फिल्म में रोहित के काम करना चाहोगे? आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन हिम. बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, मुझे बहुत मज़ा आया इनके साथ काम करने में. बट it depends, I think. What do you feel? We are not, obviously we'd love to work with each other constantly because there's a very, very strong comfort level, and when you love your actor who's standing in front of the camera, you work even 10 times harder, you know, and that's how I feel about Varun, and I even feel exactly the same way about John, you know, he's like an elder brother to me. But not obliged to work with each other, and at the end of the day I would only want Varun to work with me if he likes the material and if he likes the script I go to him with, because you'd rather be honest to each other, you know, than सेट पे ज़्यादा टफ कौन था? आपका रियल लाइफ भाई या फिर वो जिसके साथ आप फिल्म कर चुके हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल? सबसे टफ कौन था? टफ मतलब dealing with the actors. He was the toughest. Oh my God, And I can tell you, John was nicer to me than Rohit on the film.
नहीं अभी तो स्टार्ट होगी, यही मार्केटिंग फर्स्ट डे, आज ही मार्केटिंग। ओपनिंग आपके साथ ही की हम लोगों ने। आई एम राइटिंग, नॉट द नेक्स्ट ईयर। नहीं जस्ट अभी नेक्स्ट ईयर आई स्टार्ट राइटिंग। थैंक यू। बिफोर वी गो आप लोगों ने पूछा था हम लोग क्या सीन शूट कर रहे थे। सीन तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पर उसका फिल्म का एक डायलॉग बोल सकता हूँ एक्सप्लेनेशन देने के लिए। इसके बाद मुझे बहुत मार पड़ने वाली है, बट इम्प्रॉम्प्टू बोल दूंगा। ये अरबियों का डोंगरी है, या शानपट तो सिर्फ शानों पे जचती है, पुलिस वालों पे नहीं। थैंक यू। Thank you guys, thank you for watching our video. I hope you have enjoyed the video. Like it, share it, comment it, and also subscribe to our channel for more Bollywood updates. Thank you.